Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your new images textbook, Chapter 5. The name of the chapter is Sleepy Harry, and this is for Class 1 who isn't sleepy at all. अब स्लीपी हैरी एक ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। देखते हैं ये चैप्टर किस बारे में है। So before starting, let us read about the author. Jane Taylor was born on 23rd September 1783 in London, England. अब जेन टेलर हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ये बॉर्न हुई थी 23rd of September 1783 लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। She wrote the popular rhyme Twinkle Twinkle Little Star. Her sister Anne Taylor also wrote many poems and stories just like Jane. अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो सबने सुनी है और वो पोयम लिखी है जेन टेलर ने। स्लीपी हैरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय हु डज नॉट वांट टू गो टू स्लीप। अब स्लीपी हैरी एक ऐसे छोटे बच्चे की पोयम है, वो नहीं चाहता कि वो सोए, उसको सोना ही नहीं है। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग बट हिज सिस्टर वॉन्ट्स हिम टू गो टू बेड बिकॉज इट इज़ लेट। अब हैरी चाहता है कि वो बस खेलता रहे, लेकिन उसकी सिस्टर चाहती है कि अब लेट हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए। रीड ऑन टू नो व्हाट हैपेंस। अब क्या हुआ, हैरी सोया कि नहीं सोया, ये तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। I do not like to go to bed, sleepy little Harry said. Go naughty Betty, go away. I will not come at all, I say. अब लिटिल हैरी क्या बोलता है कि वो बेड पर नहीं जाएगा, वो नहीं सोएगा। और बेटी बेटी उसकी सिस्टर का नाम है, तो वो बेटी से कह रहा है तुम यहाँ से जाओ। आई विल नॉट कम एट ऑल आई से। आज वो बेटी के पास नहीं जाएगा और आज वो बेड पर नहीं सोएगा। लिटिल हैरी सोने के लिए मना कर रहा है स्ट्रांगली। Oh, silly child, what is he saying? As if he could be always playing. Then, Betty, you must come and carry this very foolish little Harry. अब एक किसी ने क्या बोला कि ये सिली छोटा सा बच्चा, बेवकूफ़ सा बच्चा क्या बोल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये कभी सोए ही नहीं हैरी और बस खेलता रहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि बेटी, तुम्हें तो इसको कैरी करके लेकर आना पड़ेगा, गोदी में उठा कर लेकर आना पड़ेगा। The little birds are better taught. They go to roost when they should. And all the ducks and fowls, they went to bed an hour ago. Roost is a place where chickens and all are kept. So यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि तुमसे अच्छे तो चिकन्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। टाइम होने पर वो अपने अपने घर चली जाती हैं। एंड दे वेंट टू बेड एन आवर अगो। एक आवर पहले वो ऑलरेडी अपने बेड पर जा चुकी हैं एंड वो अच्छे बच्चों की तरह सो भी चुकी हैं। सी दिस इज़ बेटी एंड दिस इज़ योर लिटिल हैरी, जिसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और उसको नहीं सोना है। दिस वॉज योर पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Question 1 says, say if the following statements are true or false. Harry wants to sleep. क्या हैरी सोना चाहता है? बिल्कुल नहीं, हैरी तो नहीं सोना चाहता है। Betty is Harry's sister. क्या बेटी हैरी की सिस्टर है? Yes, of course. Harry wants to play all night. बिल्कुल सही, वो रात भर खेलना चाहता था। The little birds went to bed an hour ago. Correct? लिटिल बर्ड्स तो एक आवर पहले ही बेड पर जा चुकी हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डज हैरी नॉट वांट टू गो टू बेड? हैरी डज नॉट वांट टू गो टू बेड बिकॉज ही वांट्स टू प्ले ऑल नाइट। व्हाट डज बेटी से? What does Betty say? Betty says that the little birds are better taught. Why is Harry called foolish? Harry is called foolish
because he wants to play all night. लिटिल हैरी को रात भर खेलना है और इसी वजह से उसको foolish बोला गया है. With that, your question and answers is also complete. If you have any doubt, you can write me in the comment section below. If till now you have not subscribed the channel, kindly subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.